Hello students, welcome to all. So today we are going to start our MSc first year second semester course, and I am here to teach you the paper Numerical Techniques in Physics, paper number PHY 203. Right? So this is Numerical Techniques in Physics. Let us see first of all what is meant by numerical techniques in physics. So पहले हम देखेंगे कि what is meant by numerical techniques in physics. So we know that we are solving some numericals in mathematics, right? So the techniques of solving the numericals in mathematics, that techniques we are applied over here, right? So that means we are using the techniques of solving numericals in mathematics. जो भी techniques हम mathematics में numerical solve करने के लिए use करते हैं, वो techniques हम यहाँ पे physics में use करते हैं. That's why we know it as numerical techniques in physics, right? आज के लेक्चर में हम ये हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस का खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे. ठीक है, कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम सिलेबस एक्चुअल सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे. राइट. सो इन न्यूमेरिकल टेक्निक्स वी हैव 4 यूनिट्स. राइट. सो फर्स्ट वन इज कर्व फिटिंग एंड इंटरपोलेशन, देन सेकंड वन इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, देन थर्ड वन इज solution of simultaneous equation, and fourth one is C programming. Right. So we have 4 units. So let us discuss one by one. Right. So in these numerical techniques is basically divided into 2 types. First one is numerical integration and second one is numerical differentiation. ठीक है, जो भी हमारा numerical techniques है, जो भी numerical methods है, वो 2 टाइप से डिवाइड किए जाते हैं. First one is numerical integration and second one is numerical differentiation. Right. So before going to that numerical integration and numerical differentiation, we have to know some operators, some basics of this numerical techniques that we will discuss in our first unit. So our first unit is curve fitting. Curve fitting and इंटरपोलेशन. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यूनिट का टाइटल है कर्व फिटिंग एंड इंटरपोलेशन. ठीक है, इसमें हमें कर्व फिटिंग देखनी की है एंड देन नेक्स्ट वन इज इंटरपोलेशन. राइट. सो व्हाट इज मीन बाय कर्व फिटिंग? राइट. सो कर्व फिटिंग मीन्स क्या है? ठीक है, सो कर्व फिटिंग मीन्स कर्व फिटिंग इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर. जो भी हमारा डिपेंडेंट पैरामीटर है एंड इंडिपेंडेंट पैरामीटर, उन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं जो गिवन डाटा रहता है हमारा. ठीक है, x and f of x. Let us suppose that the x and f of x are the 2 parameter, dependent and independent parameter. Right. This is independent, this is dependent. Right. Because f is a function of x. Right. That's why f of x is a dependent parameter and x is independent parameter. So we are finding in curve fitting, we are finding the relation between this independent and dependent parameter, so that that relation satisfies the given data as accurately as possible. That means जो रिलेशन हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, कर्व फिटिंग में जो भी हम रिलेशन ऑब्टेन करते हैं, वो रिलेशन जो गिवन डाटा है, सपोज x इज गिवन, x हैज वैल्यू 4 एंड f of x वैल्यू हैज 16, देन वी हैव द रिलेशन एज x इज इक्वल टू और f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन. सो जो भी हम कर्व फिटिंग करते हैं, ठीक है, जो भी कर्व हम फिट करते हो ये गिवन डाटा के लिए, तो वो कर्व क्या करना चाहिए, ये हमारा रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. उसको हम क्या करते हैं, कर्व फिटिंग. राइट. So in this curve fitting, we are going to use the principle of least square fit. Right. So हमारा फर्स्ट आर्टिकल आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट. ठीक है, तो हमें देखना का प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट मीन्स क्या है. ठीक है, वो कैसे यूज करते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद बाय यूजिंग दैट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट, we are going to obtain the curve for the straight line. We are fitting given data in a straight line curve, then in ellipsoid, then in parabola, second degree parabola, then we are obtaining the curve for exponential, then we are obtaining the curve for y is equal to a into x to the power b. So here we are going to obtain y is equal to axb, that is straight line curve. Right. Then second one is y is equal to ax square plus bx plus c. This is second order parabola. Then third one is y is equal to a into x to the power b, and fourth one y is equal to e raised to power ax, b into e raised to power ax or something exponential. Right. So we are going to obtain, or we are going to fit the curve for straight line, parabola, then y is equal to a into x to the power b form, then next one y is equal to b into e raised to power x.
Right, so we are going to feed the curve for all this equation. Right, so this is nothing but curve fitting by using the principle of least square method. Right, तो जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद एक एक लेक्चर में हम ये पूरे मेथड्स डिटेल में स्टडी करेंगे. राइट्स. देन नेक्स्ट वन इज इंटरपोलेशन. राइट्स. सो व्हाट इज मीन बाय इंटरपोलेशन. राइट्स. ये हो गया कर्व फिटिंग के बारे में. उसके बाद आ जाता है इंटरपोलेशन. राइट्स. सो इंटरपोलेशन मीन्स क्या है, तो हमें जो भी सेट ऑफ गिवन वैल्यूज रहते हैं, ठीक है, हमें कुछ सेट ऑफ गिवन वैल्यूज रहते हैं, उसमें से हमें अननोन वैल्यू फाइंड कर रहे थे. लेट अस सपोज दैट हियर वी हैव 1995, so year 1995, then 2005, then 2015, then 2025. These are the years and these are the population in year. Right. Let us suppose that 1 2 3 4 5, so these are the population in that respective years. So these are the set of given values. Right. And we have to find the unknown value. That means here in year 1995 the population is 1 and in year 2005 the population is 2. So these are the known values. So in year 1995 we know what is the population, and in 2005 we already know what is the population, but in between, so we don't know what is the population in 2000. Right. So in 2000 year, that means जो भी 2000 ईयर है वो उस ईयर में क्या पॉपुलेशन कर रहा है, मीन्स वो अननोन वैल्यू हो गई हमारी. ठीक है. सो वो अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन यूज करते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरपोलेशन. सो फाइंडिंग आउट द अननोन वैल्यूज फ्रॉम द गिवन set of values is known as interpolation. Right. So in interpolation we are going to discuss forward in Newton forward formula, Newton backward formula, then central difference, and then again for non-equal intervals. Right. So here let us see for given data here 1995, 2005, 2015, 2025. So all these are of equal interval. That means interval in between these two is 10, is this to 10, in this to 10. Right. So these are the equal intervals. Right. So therefore for the equal intervals, if you want to find out the population in year 2000, right, so in population in year 2000, then we use the formula for Newton forward difference formula. Right. Because this is, we treated this as a forward, this as a base value, and we are looking forward. Right. सो हमें 1995 का पॉपुलेशन पता है, हमें 2000 का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम ये 1995 को क्या करेंगे, बेस वैल्यू काउंट करेंगे. ठीक है. ये जो भी वैल्यू है हमारी वो बेस वैल्यू है, एंड वी आर लुकिंग टू फॉरवर्ड ट्रेंड. और पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज होता गया वो हम आगे देखेंगे. सो दिस इज नोन एज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. ठीक है. उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2015 टू 2025, अगर यहाँ पे हम 2020 की वैल्यू करें, पॉपुलेशन इन द ईयर 2020, सो देन वी ट्रीट दिस एज बेस वैल्यू. ठीक है. आइए इसको हम बेस वैल्यू ट्रीट किया और हम इस तरफ जाएंगे. उसको क्या बोलते हैं हम, मीन्स वी आर गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इट नोन एज न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला फॉर द इंटरपोलेशन. देन अगेन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू इन बिटवीन, ठीक है, 1995 2015. सो अगर हम इन बीच में वैल्यू फाइंड आउट करने की है तो उसके लिए हम सेंट्रल डिफरेंस यूज़ करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, उसके भी 2-4 फार्मूले हमें स्टडी करने के, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस, गॉस बैकवर्ड डिफरेंस, फिर उसके बाद स्टर्लिंग आ जाता है. ठीक है. और बेसल, ये 4 फार्मूले हैं हमें इसके लिए, सेंट्रल डिफरेंस के लिए. ठीक है. तो वो 4 फार्मूले हमें डिटेल में स्टडी करने के. उसके बाद क्या आता है, दीज ऑल आर अबाउट फॉर इक्वल इंटरवल्स, फॉर न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, देन गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड for central difference, and Stirling and Bessel's. These 4 are for central differences. Then for unequal intervals, right? So these are for the equal interval, because 1995 2005 these all are having the intervals 10 years, right? So these are for the equal intervals. But for unequal intervals, let us suppose this is 1995, this is 2000, again this is 2015, and this is again 2020. So these intervals are not equal. That means these are unequal, right? So for unequal intervals we have the formula as Newton divided difference table. Newton divided difference table. So for unequal intervals we are going to use Newton divided difference formula, right? So this is all about the interpolation, right? So curve fitting and interpolation. In first units again we have roots of, next topic is roots of equation. That means we are going to find out
the roots of some equation by using Newton-Raphson method, then regular false position method, then synthetic division method, then complex roots. So all these are all these methods are we are going to use to find out the roots of equations, right? So that we will study detail in whenever we are start our that article, that means only finding the roots of the equation. This is all about the first equation, right? So then in second sorry, this is all about our first unit. Then in second unit is all about the numerical integration and numerical differentiation, right? So numerical integration and numerical differentiation. This is numerical integration and numerical differentiation, right? So most of student, आप में से बहुत स्टूडेंट ने ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टडी किया वाला है, ठीक है, इन मैथमेटिक्स इन आवर डिग्री कोर्स, राइट? सो आपने आपके डिग्री कोर्स में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टडी किया है. तो वी आर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है. वहाँ पे आपने कुछ फार्मूला स्टडी की, ठीक है. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के हमें 4-5 फार्मूले यहाँ पे स्टडी करने के. सो फर्स्ट वन इज न्यूटन कोट्स फार्मूला which is also known as parent formula, because all the remaining formula for the numerical integration we are derived from the Newton Cotes formula. That's why this formula is known as parent's formula. Newton Cotes formula is also known as parent formula. Then next one is trapezoidal rule. Right, you already studied this trapezoidal rule for finding the numerical integration. Then next one is Simpson's 1/3 rule. Right, then next one is Simpson's 3/8 rule. Then next one is Monte Carlo method, and then next one is Gauss quadratics method. So all these are the methods to find out the numerical integration that we will discuss in detail. That's then numerical differentiation. So in numerical differentiation we are finding out the solution of the numerical differentiation. So there we are going to use Taylor series method, then Euler method, then RK method, Runge-Kutta method, and predictor corrector method. So all these methods we are going to use in numerical differentiation. Then next one is next unit. This is all about numerical integration and numerical differentiation in unit second. Then next unit is about solution of simultaneous equation. Right. So आपने ये solution of simultaneous equation बहुत इससे पहले भी स्टडी किया है, ठीक है. आपको कुछ simultaneous equation दिए जाते हैं और उस simultaneous equation को आपको solution निकालने का है. So आपने ये equation solve किए by using the inverse method, right? Matrix inverse method, ठीक है. तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे methods और method स्टडी करने के by using that method we are going to solve that simultaneous equation. So here we are going to study Gauss elimination method, then pivotal condensation method, Gauss-Jordan elimination method, Gauss-Seidel iteration method, Gauss-Jordan matrix inversion method, and Gauss elimination method, right? So all by using all this method we are going to solve the simultaneous equation. And then in unit third we are going to study the eigenvalues and eigenvectors, right? So that we will see later one by one, right? So how to obtain the eigenvalues, what is meant by eigenvalues and eigenvectors, how they will be calculated. So that we will see in our unit third. And unit third, one more article is nothing but partial differentiation, right? So then in unit fourth we are going to study, so whatever the unit we are studying in unit first, unit second, in unit third, all these are the mathematical threads. So in unit 4 is completely different from all these three units, right? So in unit fourth we are going to study the C programming, right? So whatever we study in this, whatever the formula we obtain, Newton Cotes formula, trapezoidal, Simpson's 1/3, Simpson's 3/8, and we are going to solve some problems based on it, right? So all that problems, so we are going to create for this formula, we are going to create one program. So by using that program, by just changing the value, we can find out all this solution of all this integration, right? So by using trapezoidal rule, so we create one program for this trapezoidal formula, and by just changing the values we can find out the solution directly. So no need to calculate all this, right? So that we will see, this is the short method, right? So programming, so by when we create one program, and by that program, just according to our problem, we just interchange the value and we can get directly solution, right? So by using that we can find out all this, we can solve all these problems, right? So this is all about our C program, right? So this is all about the numerical techniques, right? So ये numerical techniques में हम ये basic introduction हो गया, जिसमें हमें क्या क्या करना है. फर्स्ट यूनिट में हमें कर्व फिटिंग एंड इंटरपोलेशन पढ़ाई करने का है.
ठीक है। सो कर्व फिटिंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। कर्व फिटिंग मीन्स क्या है, हमें सेट ऑफ जो कि नोन वैल्यू एंड अननोन वैल्यू इन पैरामीटर के बीच में जो भी रिलेशन है वो रिलेशन फाइंड आउट करने का है और उसका कर्व ऑब्टेन करने का है, ठीक है। यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका जो भी इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन राइट करेंगे। उसके बाद आता है इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन मीन्स क्या है, जो भी हमें नोन वैल्यू रहती है, जो भी हमें डाटा प्रोवाइड रहता है, उस डाटा में से हमें अननोन वैल्यू का डाटा, अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने की, ठीक है। सम अननोन वैल्यू के लिए हमें जो भी वैल्यू आएगी, जो भी सोल्यूशन आएगा वो फाइंड करने का। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। हमें कुछ इक्वेशन दिए जाएंगे, उसके रूट्स फाइंड आउट करने के बाय यूजिंग सम मेथड्स। देयर वी आर यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड, रेगुलर फॉल्स पोजीशन, राइट। सो ऑल दिस मेथड, बाय यूजिंग दैट मेथड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वो मेथड क्या है, कुछ क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल सिलेबस। हियर वी आर जस्ट लुकिंग द ओवरव्यू ऑफ आवर सिलेबस, राइट। देन इन यूनिट सेकंड we are going to study the numerical integration and numerical differentiation. Most of the part from unit second you already studied in our BSc. Those who have mathematics as one of the optional subjects, जिनका mathematics as one of the optional subject था, उन्होंने most of the part from this unit second they will already studied. उन्होंने most of the part जो यूनिट सेकंड का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का वो स्टडी किया है मैथमेटिक्स में, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर में, ठीक, जहाँ पे हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में न्यूटन कोट्स फार्मूला, देन ट्रैपेजॉइडल, देन गॉस क्वाड्रेचर, देन सिम्पसन्स 3 बायोट, ये ऑल फार्मूले यूज़ करके हमें कुछ न्यू इंटीग्रल्स सॉल्व करने के, ठीक है। ये ऑल फार्मूले हम डिराइव करेंगे, ये सभी फार्मूले हमें डिराइव करने के, उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ सम न्यूमेरिकल differentiation by using Taylor series, then RK method, then predictor corrector method and all. Then next third unit आ जाता है हमारा simultaneous equation, solution of simultaneous equation. हमें कुछ simultaneous equation solve करने के by using matrix inversion method, then Gauss-Jordan method, then next one is Gauss elimination method, then pivotal condensation method. So all this method, by using the method we are going to solve the simultaneous equation. Then we are going to study some eigenvalues. We are finding the eigenvalues and eigenvectors for the given set of equation. Then we are going to solve. Then we are going to study some partial differentiation equation. And the last one, unit 4th, is all about the C programming. That's so ये हमारा सिलेबस है टोटल्स, ठीक है. ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है. अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते जाओगे तो बहुत ईजी है. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गेट दिस. ओके, नेक्स्ट यूनिट से हम हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर फर्स्ट यूनिट कोर फिटिंग एंड इंटरपोलेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट आर्टिकल होगा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट. राइट्स. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गेट द आइडिया अबाउट दिस syllabus of our MSc first year second semester of the paper numerical techniques in physics. Right. So thank you and keep learning.